Hi, this video is brought to you by Sensoriom. If you are having trouble in getting in shape, or you want to set right your blood sugar in control, or if you have parenting concerns, or you're worried about your uncertainties, Sensorium experts can help you feel good at penny prices. I am leaving a link below to check out their offerings that can help you and your family to regain happiness by simple consultations from the eminent experts. Why don't you check this out now? Even if you are not an Indian, then also you can seek help from Sensorium at very affordable rates. Drop your message in the comment box and do let me know if you need any help from Sensorium. Let's get started. This is Priyadarshini Tripathi from Sensoriom, and today I'm here to talk about another new topic. But yes, it's very in the trend, looking into the changing circumstances of now and then in the work setups. So recently there have been notices from a lot of organizations that they are going offline from online, since the time of COVID. So let's just talk about that stresses. So the major topic which I will be focusing is coping up with the day, how to manage. So when you talk about these n number of cases that I've seen is employees do not like the work environment, or they have a specific glitch from somebody. You seeing that person, you do not want to work, or there is a disagreement with the team leader that you have. So after conducting a lot number of tests, also there were ऐसी बहुत सारी examples मैंने देखे जहाँ पे ऑफिसेज में लोग आते थे एंड दे वर स्ट्रेस्ड, वो अपना द बेस्ट नहीं दे पा रहे थे जस्ट बिकॉज उनके साथ इन पर्टिकुलर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी घर में, उनके कुछ घर में प्रॉब्लम थी. एंड ऑफ कोर्स हम इंसान हैं एंड वी कैन नॉट कम्प्लीटली टेक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखें. दोनों के इम्प्रिंट्स कितनी भी आप कोशिश कर लो साथ जाते ही जाते हैं. आपके ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आधे घंटे बाद घर पहुंच रहे हैं और सब कुछ भूल जाएं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन. वी कैरी इमोशंस विद अस. या फिर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है या आपकी किसी से बहुत लड़ाई हो गई है और वो आप सब कुछ भूल के एकदम अपने एफिशिएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफिस में काम करें. दिस इज़ समथिंग वेरी इम्प्रैक्टिकल. सो वाई नॉट टॉक अबाउट इट. एंड नंबर ऑफ केसेस मैंने यही देखे कि घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो लेके आते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट बीइंग एबल टू गिव देयर 100%. अलॉन्ग विद दैट ऑफिस कलीग से अचानक से बन नहीं रही है व्हाट टू डू. सो इन दैट केस आई वुड रादर सजेस्ट टू द टीम लीडर टू जस्ट टॉक, fix a private meeting with both the parties, make them have a conversation. And if that does not settle, maybe it's high time that you give them very different tasks. And if that also does not sort out the problem, you can change the team of one of the person, whoever you like to. Also, कभी कभी मोटिवेशन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. we do not get the reason of the very why should I work here and why am I working still with this same firm. That also creates stress and conclusively the performance decreases. So why are we talking about stress, anxiety and all the problems in a work setup? Because इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आपकी परफॉर्मेंस आपके ऑफिस में कैसी है. इमेजिन करिए a situation wherein you don't want to work for the person and you're not feeling good अंदर से and you're just given a new task. Just tell me if you're stressed or if you take a physiological problem, not a psychological problem for that instance. अगर आपके मैं कहूँ कि मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट असाइन कर रही हूँ और आपके पेट में बहुत बुरा वाला दर्द है, कितना अच्छा आप उस प्रोजेक्ट में अपना इनपुट दे पाओगे? आई डोंट थिंक इट विल बी 50% इवन, राइट? ऐसी ही कुछ कंडीशन होती है जब हम साइकोलॉजिकल अच्छा फील नहीं करते. इस कंडीशन में भी यही होता है कि हमें बस मन नहीं करता कुछ करने का. तो आप दिमाग से अगर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके काम में भी दिख जाएगी. और वर्क प्लेस में
अच्छा काम करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज येस एवरीबडी इंक्लूडिंग मी यू एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन वट एवर थिंग दे आर डूइंग. Hence, it's very important to take care of your psychological well-being or your mental health, even in your workplace. Lot of stresses, work pressure, marketing के लोग मैंने बहुत सारे देखे जिन पे target pressure होता है या they have to reach one particular goal by the end of the month. How to tackle that? Work for it. You have got no other solution. पहला हमारे पास तो ये है. Second is you can perform n number of when the anxiety increases beyond the capacity, जहाँ आपको लगता है कि अब ये आपको थोड़ी एंग्जाइटी थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है बिकॉज वो आपको और अच्छा करने में मदद करता है. पर जब एक लेवल के बियॉन्ड जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. सो यू स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस विच इज नोन एज द गुड स्ट्रेस. इफ यू हैव यू स्ट्रेस you will work good, you will perform better because then you'll be pressurized कि यार नहीं किया तो बॉस पे क्या impression जाएगा, कहीं निकाल ना दें या ऐसा कुछ भी. That makes you work. But if this you stress gets converted into de-stress, which is a negative word, which is the amount of pressure, the amount of stress that you're taking which is not good for you, that's known as distress. ऐसा नहीं होना चाहिए, distress नहीं होना चाहिए. You stress is good for your performance. So when the de-stress occur wherein you feel like you're not able to perform because you keep thinking and there is a ruminating thought in your brain, आप बार वही चीज़ सोच रहे हैं because of which you're not able to perform. इस केस में हमें सिर्फ कुछ exercises करनी चाहिए which are n number of relaxation exercises that cannot be shown as of now. But yes, if you have any query you can put it up in the comment box and we can show you a sample of how to simply self-perform those relaxation exercises in any kind of settings. Meditation, of course, हर जगह हम सुन रहे हैं meditation, yoga helps, and trust me, it really helps. In the morning, if there is a 15-20 minutes also, if you dedicate it to the meditation process, it really helps to a very, very huge limit. Another things that you can do is you can start writing journals. You can start noticing your feelings. So we also have so many tests in which see अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो वो एक बार में तो जाएगा नहीं, वो हमेशा ही ग्रेजुअल होगा. आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी टेस्ट में 0 परफॉर्म करके आ रहे हो एंड द नेक्स्ट टाइम यू सिट यू गेट 100. वो सिर्फ मिरेकल होता है. ह्यूमनली सेटिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है. तो उस केस में हमें क्या करना है कि हम 0 से 20 to 50 to 70 and then maybe we can think about 100. So it's a very gradual process for which nobody except you has to work and your therapist of course. So इस केस में भी हमें यही करना है. There are so many tests that we have designed that we already are available with, जिसमें हम आपको आपके बिफोर एंड आफ्टर से रियलाइज कराते हैं दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव बीन थ्रू. ये आप पर्सनली भी कर सकते हैं. यू कैन counterfeit your you can make notes of what was the improvisation last week in comparison to the week that went before, or what is the improvisation in this week in comparison to the last week. इससे क्या होगा, एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा आपको पता चलेगा कि किन किन एरियाज़ में आपको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है. एंड नंबर ऑफ टाइम्स अनदर स्ट्रेसर जो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि उनको वर्क एनवायरनमेंट नहीं अच्छा लगता है. अच्छा, हमारे आसपास जैसा भी माहौल है, मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ. इट्स अबाउट hygiene, it's also about cleanliness, it's also about how do people treat each other, it's also about how healthy is the environment. See, nowadays there is a word which is very commonly used by everybody, which is toxic. There's a very thin line difference between a toxic environment and an environment which is highly competitive. A toxic environment is an environment wherein everybody is just jealous and nobody wants to see the other person ahead of them. But a very competitive environment is, yes, there is competition, yes, everybody wants to win the race, but yes, if I ask for help from any of my colleagues, they would not backstep me, they would help me. So there's a very thin line difference between a toxic environment and a highly competitive environment, जो सबको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है.
You should not use such negative words for any working environment. But at the end of the day, if you really feel all these things are not working out, you still don't want to. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी और टाइप के फर्म में काम करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर्स एंड एवरीथिंग वी आर वर्किंग इन सम अदर फील्ड. But at this particular moment of time, you need to realize that it is not going to benefit you in the long run. You might have a lot of money, but वो पैसे भी आप एक टाइम बाद कमा नहीं पाओगे बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं है आपका. आप करोगे भी तो कैसे? बिकॉज you genuinely not interested in that particular thing. So you need to counterfeit all these things if you really want to grow in your organizational setting as well, which is equally important because it's a highly competitive world and you need to have a very very different recognition of yourself. We can talk about it a lot, and if you really want me to be sharing a lot more views on this particular, please mention it in the comment section. That's it for today. Thank you everyone.